नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले पीएम का संबोधन भी आपने देखा था और अब फोटो ऑप की तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देखिए, पूरा डेलीगेशन इस समय यहाँ पर मौजूद है। एंथनी एल्बनीज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं पूरे डेलीगेशन के साथ में। पीएम मोदी ने ये तस्वीरें यहाँ पर खिंचवाई हैं। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का कुछ देर पहले आपने संबोधन भी यहाँ पर सुना था कि किस तरीके के समझौते ऑस्ट्रेलिया के साथ में किए गए हैं, कैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आप देख रहे हैं कि रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम एमओयूज भी यहां पर साइन किए गए, जिसका जिक्र पीएम मोदी की तरफ से यहां किया गया है। तो प्रधानमंत्री की ये विजिट बेहद महत्वपूर्ण रही और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए एंथनी एल्बनीज के साथ में जो उनकी तस्वीर वायरल हो रही है वो भी आपने देखी कि कैसे उन्होंने एक सेल्फी भी यहां पर ली। तो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने किस तरीके से औपचारिक स्वागत किया और ये जो महत्वपूर्ण दौरा है दोनों देशों के बीच में यूरेनियम सप्लाई और गगनयान मिशन में सहयोग जैसे कई अहम समझौतों पर यहां चर्चा हुई है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जानकारी साझा की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यूरेनियम डील पर मुहर लगी। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज की बीच में जो बैठक हुई है उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कुछ समय पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपसे साझा की, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कई अहम समझौतों का ऐलान यहां पीएम मोदी की तरफ से और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की तरफ से यहां किया गया। पीएम मोदी ने साफ अपने बयानों में कहा कि ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम मिलने से भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को और ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो कॉरिडोर बनने की बात है उसे भी हम विकसित करेंगे। कोकोस यानी कि किलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल भी बनाया जाएगा, जिससे भारत के गगनयान मिशन को और ज्यादा मजबूती और मदद मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़े समझौते जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत के हुए हैं उसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने क्रिकेट का जिक्र यहां पर किया कि हमारी मुलाकातें क्रिकेट जैसी होती हैं। एजेंडे में वनडे जैसे फोकस होता है, फैसलों में T20 की तरह तेजी होती है और हमारी साझेदारी टेस्ट मैच की तरह लंबी और बेहद मजबूत होती है। तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, उनकी तस्वीरें हैं। पूरा डेलीगेशन यहाँ फोटो ऑप के दौरान उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी के साथ में पीएम एल्बनीज की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें कही गई भारत को लेकर। उन्होंने साफ कहा कि अब तक दोनों देशों की सप्लाई चेन जुड़ी हुई है और बेहद मजबूती के साथ जुड़ी है, लेकिन हमारी नीतियां अलग अलग थीं। आज का ये कदम उस दूरी को खत्म करने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, ये एंथनी एल्बनीज की तरफ से कहा गया। दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इसी के साथ सप्लाई चेन पार्टनरशिप शुरू करने पर सहमति जताई। इसके तहत में दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग का भी जिक्र यहाँ पर किया गया, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इसी के साथ डिजिटल रेजिलियंस जैसे क्षेत्रों में एक साथ रिसर्च करने की भी बात यहाँ पर सामने आई है। तो आपने फोटो आपकी तस्वीरें देखी, ये बेहद अहम तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। जो भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे हैं, जब भी पीएम मोदी विदेश की भूमि पर होते हैं भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उनकी मुलाकात ज़रूर होती है, उनको संबोधित पीएम मोदी की ओर से ज़रूर किया जाता है और भारतीय संस्कृति भी आपको यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। तो यूरेनियम को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ, AI को लेकर समझौता हुआ, गगनयान मिशन में किस तरीके से मदद यहाँ भारत को मिलेगी उसे लेकर यहाँ जाहिर तौर पर चर्चा की गई है। तो ये तस्वीरें इस समय आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस दौरे का मुख्य आकर्षण यूरेनियम डील रही, गगनयान मिशन रहा। भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया और अभी भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले भी इस तरीके की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से सामने आ चुकी है, जहां मोदी इज द बॉस का जो एक टैग है वो यहाँ दिया गया था एंथनी एल्बनीज की तरफ से और ये भारतीय समुदाय के लोग यहाँ बेहद उत्साहित इस समय दिखाई दे रहे हैं। उत्साह, आप गूंज जो इस समय सुनाई दे रही है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। पूरा ऑडिटोरियम ये खचाखच इस समय भरा हुआ है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर कोई एक तस्वीर यहाँ कैद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया की पीएम एंथनी एल्बनीज एक ही मंच पर इस समय आपको नजर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद में संबोधन भी यहाँ पर होगा। जाहिर देखना होगा पीएम मोदी की तरफ से क्या बड़ी बातें यहाँ पर कही जाती हैं। तो स्थानीय भारतीय समुदाय में भारी उत्साह साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। भारतीय संस्कृति की एक झलक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जितने भी लोग हैं वो सभी एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहा, जो
समझौते यहाँ पर हुए हैं उसका भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि गगनयान मिशन में किस तरीके से भारत को मदद मिलेगी और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा को लेकर समझौता किया गया। दोनों ही देश हथियारों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। इसी के साथ पीएम मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र जाहिर तौर पर किया कि कैसे आतंक के मुद्दे पर दोनों देशों का स्टैंड बेहद क्लियर है। देखिए, हाथ उठाकर ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी का किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं और ऑडिटोरियम में आप भारत का तिरंगा भी देख पा रहे हैं। एक खुशी है और इसी के साथ में एक आत्मीयता का भाव जो है, एक दोस्ती का भाव जो है, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में पहले भी देखा गया है। क्योंकि पीएम की एक खासियत है, जब भी किसी देश में जाते हैं या अमूमन जो देश के शीर्ष नेता हैं उनके साथ में एक दोस्ती भरा रिश्ता भी और उसकी झलक आपको मंच पर दिखाई दे जाती है। वही झलक इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सीईओ फोरम में भी पीएम मोदी शामिल हुए। फिलहाल ये भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। पीएम मोदी यहाँ संबोधित भी करने वाले हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, पूरा ऑडिटोरियम खचाखच यहाँ भरा हुआ है। यहाँ चर्चा ऐसा लग रहा है। देखिए, मंच पर पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री, इससे पहले जो समझौते हुए दोनों तरफ की डेलीगेशन के बीच में, उसकी जानकारी भी हमने आपसे साझा की है कि किस तरीके से जानकारी दी गई कि भारत को यूरेनियम मिलने से भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो जो एजेंडा एक है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, वही एजेंडा लेकर प्रधानमंत्री इस समय चल रहे हैं, बातचीत आपस में करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पीछे एक टैग भी दिया गया है, मेलबर्न मीट्स मोदी, ये टैग यहाँ पर दिया गया और चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज इस समय आपको सुनाई दे रही है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, स्वागत के लिए सभी यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं। Australians, oh let us rejoice, for we are one and free, with golden soil and wealth for toil, our home is girt by sea, our land abounds in nature's gifts, our beauty rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia fair. Request the Premier of Victoria, Honourable Jacinta Allen, to address this gathering. Prime Minister Modi, it is my honour to welcome you to Melbourne and to Victoria. We are the education state, the multicultural capital of Australia,
and the sporting capital of the world. Yes, we are the home of the MCG and the Boxing Day Test. But much more importantly than that, we are home to more Indian Australians than anywhere else in the country. Melbourne has hosted some big visits. This one is next level. Nearly 30,000 people filling a stadium. This is a statement about the strength and energy of India. A statement about the diversity of our community, and a statement about the economic future that Victoria and India are building together. Prime Minister, when I became Premier, I determined that my first overseas trip would be to India. And I went on that trip in 2024, and I brought a few things home with me. 2,000 jobs in partnership with Indian companies, an international kabaddi match, a new deal for Indian international students, and a deep respect for India and its people and their ambition. My family will also tell you I brought home a love of yoga, and I've got a 600-day streak to show for it. Prime Minister Modi, I do invite you to take this message back home with you to India. Victoria respects India. We value your people. We welcome your students, your businesses, your families, your ideas. In Victoria, the Indian community is not just accepted, they are part of who we are. India is not just a country we trade with, it is a country we trust. And let me say this to Victoria's great, strong Indian community who are here tonight. You are welcome here. Your children never have to choose between being proudly Indian and proudly Victorian, because in this state you can be both. And here in Victoria, you can be whoever you want to be, yet stay who you are. Prime Minister Modi, thank you. Thank you for honouring Melbourne and Victoria with your visit. Thank you. And Prime Minister Albanese, thank you for your leadership, which has strengthened Australia's relationship with the world's biggest democracy. It is now my pleasure to welcome my friend, the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese. Well, thank you so much, Jacinta. And I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respect to elders, past, present and emerging. Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. And I also welcome each and every one of you out there in the stands. Over the years, this stadium has seen some loud and legendary events, and none more significant than this.
The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples. As Prime Minister, I have twice had the great privilege of visiting India, and each time I've been bowled over by the beauty and vibrancy of the land, and humbled by the generosity and warmth of its people. When Prime Minister Modi hosted me 3 years ago, we did a lap of Ahmedabad's Narendra Modi Stadium in a chariot. Now, that was an experience I will never forget. And I can say without a shadow of a doubt, the depth of affection that I felt between our two peoples in Gujarat in 2023 is